So here we have our exercise 9C. Now what is special about this exercise 9C is that it deals exclusively with compound interest, isn't it? Compound interest. Now what is, you can say, new in this compound interest, and what had we learned previously? For example, let us take an example of rupees 1000 only. If rupees 1000 is invested at for 2 years at a rate of 10%, what will be the total simple interest? So this simple interest will be equal to PRT by 100, P into R into T by 100, and this will give you how much? 1000 P R T, where is T? 2 years by 100. This will give you how much? Rupees 200 as your simple interest. Try to understand this. Now, what happens when we find compound interest? Compound interest. So here what we found that in simple interest the principal remains the same for every year, but in compound interest the principal for the next year changes. Means the principal keeps on changing, okay, changes for next year. Try to understand this, next year. Now have a look. First I shall be using the simple interest method only. So one by one let us find out the interest for first year. So my dear, the interest for first year will be the same thing, PRT by 100, that is PRT by 100, or you can say 1000 P, rate is 10%, time 1 year, because you are using it for the first year, PRT by 100. What will you get? Have a look. You will get rupees 100. Very good, no issue. Now for the second year, the principal will not be rupees 1000. Your principal will become 1000 plus 100. Means the amount for at the end of the first year becomes the principal for the second year. Why? Because you haven't paid the you can say interest. So in second year your principal will become rupees 1100. Therefore the interest for second year will be how much? So my dear, interest for second year equal to same thing, PRT by 100. So 1100, this is the new principal. Rate is your 10%, time 1 year by 100. What will you get? You will get rupees 110 as the interest for the second year. This is the interest for the second year. So you can find out your compound interest. So your compound interest will be equal to how much? Will be equal to this was your 100 and this is your 110. 100 plus 110 will be equal to 210 is your compound interest. Compound interest is equal to sum of these two interest, compound interest. Don't you see that here previously you got simple interest as 200, but on the same sum when you found out the compound interest for 2 years for the same time at the same rate, you found that your interest was more than the simple interest. Okay. However, you can find out this compound interest by one more method. That is, first you find out the amount for second year.
So amount for second year will be equal to how much? Will be equal to your principal 1100 plus principal, this is the principal, 1 minute, 1100 was your principal, and your interest was how much? 110, isn't it? 110. So amount for the second year will be equal to how much? 1210 rupees 1210. Now if this is the amount at the end of the second year, then how to find out the interest? By subtracting the principal from the amount. So compound interest is equal to amount minus principal. Amount minus principal is how much? How much is your amount? Amount is your 1210. You can subtract rupees 1000, which was your previous principal, which gives you rupees 210 as your final compound interest. So you can find out by this method also. Okay. Now I'll teach you one more technique. Before we proceed on, I'll teach you one more technique. Here we had found out our amount as 1210. Okay. Instead of going into all these details, we shall use the formula method, isn't it? We shall use the formula method. Let's see what this formula method is. Formula method. तो बेटा फॉर्मूला मेथड में क्या है कि इफ योर प्रिंसिपल इक्वल टू रुपीज 1000, your rate given is 10%, time is equal to 2 years, then how to find out the amount in one go only, मतलब एक बार में ही how to find amount. तो बेटा उसके लिए amount का फॉर्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 plus r by 100 to the power t. Once again have a look at this formula. Principal multiplied by 1 plus r by 100, not 1 plus whole, no, not this by should be only with r, to the power t. Now let us put and find it out. Principal was your 1000, rate multiplied by 1 plus rate was your 10%, rate by 100 to the power t, t is 2 years. Now how to solve? If you find that this particular portion can be reduced, you can reduce it. कमाल हो गया राजा. Come, 1000 multiplied by 1 plus 1 by 10 will be equal to 11 by 10. है कि नहीं? Whole square means what? The same thing multiplied by itself. आ जाइए, is equal to 1000 multiplied by 11 by 10 into 11 by 10. See, have a look. See, 111 into 11, 121 into 10 is equal to rupees 1210. This is the amount. How to find out the compound interest? Therefore, your compound interest is equal to amount minus principal. Amount कितना बेटा? 1210. Principal कितना? 1000 is equal to rupees 210. ये सस्ता में हमारा टिकाऊ मिल गया, सस्ता और टिकाऊ. So that is why whenever you are not forced that you use this particular method only, यही आपका रामबाण है. Means this is the formula that you shall be using it now. From now we shall be using we shall start solving the sums. So let us start solving the sums. For example, in question number 1, what do we have? Okay, तो एक ही करके they have given you a sum of rupees 8000. So in number 1, principal is equal to rupees 8000. Time they have given you 2 years. Rate is equal to 10%. And what are they asking you? Calculate the interest for the first year. Interest for
फर्स्ट ईयर, अच्छा, सो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू वही पी आर टी बाई 100, क्या जी, है ना, पी आर टी बाई 100। तो आ जा बेटा, पी आर टी बाई 100 में क्या होगा, ये वाला प्रिंसिपल पी रेट इज इक्वल टू 10 पी आर टी फर्स्ट ईयर, याद रखो फर्स्ट ईयर, तो एक ही साल के लिए आप निकाल रहे हैं ना, पी आर टी बाई 100, ओहो, equal to rupees 800. Very good. Now, if you have found out the interest for the first year, can't you find out the you can say the amount of the first year? तो बेटा अमाउंट यहीं पर है, आप निकाल लीजिए ना। तो अमाउंट विल बी इक्वल टू हाउ मच, विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वाज हाउ मच, प्रिंसिपल वाज योर 8000, आ जाइए, ये 8000, आपने इंटरेस्ट निकाला रुपीज़ 800, so your answer will be equal to 8800, means rupees 8800 is the amount at the end of the first year which becomes the principal for the second year. मतलब if you will not pay this particular amount, तो naturally burden तो आप ही का बढ़ेगा ना, हैं? So the principal for second year, principal for second year will be equal to how much? Will be equal to rupees 8800. Principal is given, rate is same, time is 2 years. What are they are asking you? They are asking you find the interest for the second year. तो बेटा the same thing आ जाइए ना, तो interest will be equal to interest for second year will be equal to वही PRT by 100, the same नाटक 8800. P रेट कितना, वही सेकेंड ईयर, यू आर फाइंडिंग नॉट ऑफ 2 years, याद रखो अंग्रेजी समझो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8800 इंटू पी आर कितना बाबू, 10%, टाइम इज हाउ मच, 2 years, पी आर यार कमाल, हम सिखाते कुछ और है और अपनी लटक जाते हैं। पी आर टी बाई 100, ओके, कम लेट्स कैंसिल, ओहो हो, तो बेटा यहाँ क्या हो गया, 880 is equal to rupees 880. This is what? This is the interest for the second year. तो कर रहा है, final amount will be how much? तो final amount will be, I will add this 880 in rupees in the principal. So your amount will be equal to how much? Amount will be equal to, एक मिनट आ जाओ, amount amount, amount at the end of 2 years, at the end of 2 years. So at the end of 2 years में amount क्या होगा आपका, amount will be equal to principal plus interest, principal was how much, 8800, ये है ना, प्रिंसिपल वाज योर 8800 और आपने इंटरेस्ट निकाला था कितना, 880, सो हाउ मच विल यू गेट, रुपीज 9680 इज योर फाइनल अमाउंट, ठीक है, फाइनल अमाउंट। तो व्हाट आर दे आस्किंग यू, फाइंड द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, सो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू अमाउंट में से आप प्रिंसिपल गायब कर दीजिए। सो अमाउंट इज हाउ मच, 9680। व्हाट वाज द प्रिंसिपल, हाउ मच मनी डिड यू टेक, तो यू हैड टेकन ओनली रुपीज 8000, याद करो, चलो 9600 minus 8000, okay, that will give you how much, so rupees 16, what I am writing, 1680 is the compound interest. Very good. I hope you have understood this. If you have understood this, then I am sure you can solve the second one also. So question number 2, solve it. मेरा नाम लेके सॉल्व कर लेना, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। आ जाओ बेटा नंबर 3 में। कम टू क्वेश्चन नंबर 3, 2-4 सम बनाएंगे, ज़्यादा नहीं, ओके। नाउ एज आई टोल्ड यू,
that until and unless you are being asked, do not try to be smart. और ये वाला जो old traditional method इसको बोलते हैं, okay, you forget this, because when you will be asked to find out the compound interest, the easiest method will be formula method, formula method. और हमने अभी सिखाया था, क्या सिखाया था बाद में, पहले यहाँ पे first let us see what data they have given. Calculate the amount and the compound interest. ठीक है बाबा, वो तो निकालना ही है. First you give me the data, no, on rupees 12000. So they have given you the principal as rupees 12000. Time is equal to 2 years. ठीक है. Rate equal to 10%. कमाल हो गया. What are they asking? Find the compound interest. So let us first find the amount. No. So amount will be equal to how much? Amount will be equal to, let me take out another pen, because this has started bolting. Okay. So amount will be equal to why? P 1 plus R by 100 to the power T. Come on, let's put P. P is your 12000. Principal into 1 plus rate, beta 10 by 100 to the power 2. क्या बात है. Let us do some cancellation over. Okay. Let us do some cancellation over. क्या है वो यहाँ पे 10. How many times? Okay. Here what you will get? 11 by 10. So my dear, here 1200. Aji 12000 multiplied by 11 by 10. 11 by 10 whole square means 12000 into 11 by 10 into 11 by 10 into 11 by 10 into 11 by 10 is 0 काटिए 0 काटिए 12 into 120 into 121. तो बेटा 120 into 121 will give you 14520. okay. हाँ, इसे 14520 is your amount. तो बोले कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए. तो कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. रे भाई, अमाउंट इज 14520 माइनस प्रिंसिपल. कहाँ है प्रिंसिपल साहब? 12000 एक मिनट, दिखाई नहीं देगा फिर. अच्छा, 4 minus 2 equal to 2. So rupees 2520 is your compound interest. As I said, same kind, nothing different is there. Okay, so have a look. Come, calculate the amount and the compound interest on rupees 10,000. They have given you principal as rupees 10,000. Time is equal to 3 years. Okay, and rate is equal to 8%. So why can't you use the formula A equal to P1 plus R by 100 to the power T? Previously T was 2, here they gave 3. कोई बात नहीं है, 2 2 and 3 3 will keep on moving like this only. Come on. Therefore what will you get? You will get amount is equal to, एक मिनट बेटा, amount तो लिख ही लिए ना. P equal to how much? 10,000 multiplied by 1 plus R, 8 by 100 to the power 3. Oh my God. Let us do some calculation. Simple calculations. Okay. Come. Is equal to 10,000 multiplied by. आजा बेटा यहाँ पे 4 how many times? 4 2s are 8. 4 2s are 8 and 4 25. So 25 plus 2 how much? 27. 27 by 25. तो यहाँ हो गया आपका 27 by 25 का क्यूब हो गया. कमाल हो गया राजा. 10,000 multiplied by 27 by 25 into 27 by 25 into 27 by 25. You people might all be thinking कि ये क्या हो गया, अच्छा बस सिंपल छोटा सा कैलकुलेशन है सिर्फ. देखो सवाल है, the more tension you will take, no, your life will become hell in the, you can say in ratio to your tension. Have a look how smartly I'll cancel this. अच्छा बेटा एक तो हाँ, come on.
25 how many times? 25 fours are 100. देखिए 0 0. Then this is 25. 25 how many times? 25 16 times. 16 times is equal to 400. अब देखो, here you have 25. You know that this will not cancel, so you have only one option to multiply all of these and divide it by 25, which will make your work little hectic. So what you will do, I'll tell you. Why don't you people multiply here the denominator by 4 and the numerator also by 4? करने का बहुत कुछ किए, नहीं तो कुछ नहीं किए. So here what you will find, on the top you will have numbers 16 into 27 into 27 into 27 into 4 divided by 25 into 4 is equal to 100. कैसा रहा? When you will multiply on the top, what will you get? You will get is equal to 1259712 divided by 100. Decimal फट से पुट कीजिए जी. 12597.12. This is your rupees 12597.12. What is this? This is your amount. ठीक है? This is your amount. So your amount was rupees 12597.12. आपका principal कितना? So your principal was 10,000. 10,000. Minus कीजिए. How much you will get? 2597.12 rupees. 2597.12. What is this? This is stingray fish. This is compound interest. Clear? So this is how you people will be finding out these sums. ठीक है? एक दो तीन कम दो तीन चार कम से कम 2 3 और बनाए. ओके, ज़्यादा नहीं. नंबर 5. बेटा नंबर 5 में क्या है? कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 5000. बहुत कम पैसा है बाबा. प्रिंसिपल इक्वल टू रुपीज़ 5000. वेरी गुड. ऑन एट फॉर इन 2 years. अच्छा, इन 2 years. चलो ठीक है. If the rate of interest for successive year be 10% and 12%, मतलब यहाँ पे आपका rate is not constant. They have given you rate for the first year is 10%, while your rate for the second year, which you call it as R2 is equal to 12%. ठीक है? So rate for first year is equal to आपका 2 years और rate for second year sorry rate for first year is 10% and 12%. आ जाए. तो क्या दिक्कत है? Use the formula. Amount is equal to P1 plus R1 by 100. R1 by 100. Okay? R1 by 100. ये एक साल के लिए और the next year के लिए 1 plus R2 by 100. R2 by 100. दूसरा साल के लिए. काम खत्म. दोनों भाई खुश खुश. Is equal to. Now let us put the value. Principal is equal to how much? Principal is equal to 5000. 1 plus rate कितना बेटा? 10 by 100 और ये वाला 1 plus 12 by 100. जो भी थोड़ा सा काटा कुटी करने का मन है तो काटा कुटी कर दो यार. ओके, सी दिस 0 and 0 gets cancelled. ओके, यहाँ पे देखिए 4 3s are 12 and 4 25s are में. So what will you get? Finally what will you get? So you will get this one is equal to 5000. ये वाला 5000 into 10 plus 1 क्या हो गया? 11 by 10 multiplied by 25 plus 3. 28 by 25. ठीक है? तो कितना प्यारा. See, see how beautiful it cancel. 25 how many times? 2s are 50. 0 is equal to 20 times 11 times 28 will give you how much? Will give you 6160. What is this 6160? Is your amount. While the principal was how much? The principal was 5000. दिखाई दे रहा है ना बेटा?
चश्मा नहीं ना ज़रूरत है? क्या सर ज़रूरत तो आपको है, बोलते कुछ और हैं लिखते कुछ और हैं। कम ऑन। सो here 111160 is your compound interest। कुछ नहीं है, अरे सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाम पे सिर्फ लूट पड़ा हुआ है यार, कुछ नहीं। कम टू नंबर 6। See, in the same way, in number 6, what do you have? Calculate the compound interest on rupees 15,000 in 3 years. If the rate of interest is, अच्छा, principal कितना? Principal is equal to 15000। चलो इस बार दाम अमाउंट बढ़ाया है थोड़ा सा। Principal is this much, time is equal to 3 years। अच्छा, और R1 equal to 6%, R2 is equal to 8%, R3 is equal to 10%। तो नहीं बना लीजिएगा क्या जी, भाग मूड खराब करके रख देते हैं आप लोग ना। आ जाइए। तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया मेरा, यहाँ पे अमाउंट विल बी इक्वल टू वही द सेम चीज, ये वाला, ये फार्मूला ऊपर वाला फार्मूला इज इक्वल टू 15000, नीचे में 1 प्लस R बाई 100, कहाँ है R, ये 6 बाई 100, 1 प्लस 8 बाई 100, 1 प्लस 10 बाई 100। Solve it and you will get simple. After you can say simplify this. After you simplify, what will you get? यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे 2 तिया 6 और ये वाला हो गया कितना बार में, ये 2 पच्चे 10 और 4 दूनी और ये 25, 0 गया। तो बाबू 1515000 multiplied by, I have to use my pen, multiplied by 50 plus 3, कितना बेटा 53 by 50, multiplied by 25 into plus 2, 27 by 25 into 11 by 10, यही ना है? ठीक है, आप कैंसिल कीजिए ना जी, क्या दिक्कत है आप कैंसिल करने में? देखिए ये 0 गया है। 5 how many times? 5 3s are 15, 5 3s are 15, 0 हैं। देन यू हैव 25 कितना बार में, 4 तिया 12, 12 टाइम्स, ये 12 टाइम्स। सो हाउ मच यू विल गेट? यू विल गेट 12 into 53 into 27 into 11 by 10। सो ऊपर में 1888892 by 10 is equal to 18889.2 rupees is your amount। ना इसमें से प्रिंसिपल माइनस के दीजिए, मैं कर दो, घंटे बज गया बाबू। प्रिंसिपल माइनस की यहाँ पे कीजिए, -15000। तो योर कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड तो बड़ा में लिखने दो, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू, आप सब्ट्रैक्ट कीजिए ना राजा, इज इक्वल टू 3889.20। अरे रुपीज़ ठीक है। While preparing the videos, I know sometimes I have left the units. You do not leave all this. Okay? Come on, come to the next one. So what we have 7, when we know that the amount, is equal to P1 plus R by 100 to the power T, तो ये दुनिया में कोई टेंशन नहीं, isn't it? नहीं, sorry, कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई टेंशन नहीं है। मोहन borrowed rupees 16,000। अच्छा, सो प्रिंसिपल, एक मिनट बेटा थोड़ा सा इसको यहाँ पे ले आते। ओके, वेरी गुड। सो वेयर इज द प्रिंसिपल? द प्रिंसिपल इज रुपीज 16,000। ओके फाइन, टाइम इज इक्वल टू 3 years। ओके, रेट इज इक्वल टू 5%। कैलकुलेट द अमाउंट दैट मोहन विल पे एट द एंड ऑफ 3 years। तो बेटा क्या दिक्कत है इसमें, क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो यार तुम लोग भी हैं? सो नेचुरली व्हाट विल बी द फार्मूला यूज कीजिए ना, 16000। प्रिंसिपल 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर T। सिंपल, यानी कि थोड़ा सा कैंसिलेशन थोड़ा सा करो तो 5 1 times 5 2s are 10, 20 plus 1 21,
21/20 मतलब बाबू 16000 into 20 plus 1 21/20 into 21/20 into 21/20 बाबू सॉल्व करो इसको. Can't you solve it people? Please find it. Please find it. ठीक है, आ जाओ yourself. नंबर 8 में क्या है? रेखा borrowed rupees 40,000. अच्छा, the principal equal to rupees 40,000. क्या बात है भाई, लगता है कि शॉपिंग ज़्यादा होगा. टाइम इज इक्वल टू 3 years at 10% per annum compound interest. Calculate the interest paid by her for the second year. मतलब they have given you 3 years. They have given you 3 years. 3 years. Okay. But what are they asking you? Find amount at end of 2 years. At end of 2 years. This means that you will have to take your time as 2 years only. तो आपका जो फॉर्मूला होगा अमाउंट का विल बी इक्वल टू P 1 मिनट ये 40,000 P 1 plus R by 100 to the power 2 and not 3. इसको भी हमको लगता है कि आप निकाल लेंगे. I know it. I have so much trust on you people. अब ये मत बोलना सर फुसला रहे हैं, सही में फुसला रहे हैं. ठीक है. Calculate the compound interest for the second year. फिर the same नाटक is in question number 9. Calculate the compound interest for the second year on rupees. They have given you the principal. आ जाओ. Principal is equal to how much? Principal equal to rupees 150,000 invested for 5 years. Time is equal to 5 years and rate at a rate of 6%. What are they asking you? Find compound interest for the second year. अच्छा, so compound interest for second year. एक मिनट बाबू. Find the compound interest for the second year. Not find the compound interest of 2 years. तो for the second year. तो बेटा इसमें सेकेंड ईयर के लिए क्या करना पड़ेगा? हैं? What to do over here? Have a look. So here first I'll find out the amount for the first year. So the I will use the simple interest technique over here. So simple interest will be equal to how much? Simple interest for first year will be equal to why? PRT by 100. एक मिनट. PRT by ए बाबू की करबे PRT by 100. ओके, आ जाइए फटाफट. कितना हो गया बेटा? 6 पंचे 30 है, 15 छक्के 90 ना. ओके, 900 रुपीज़. 900 इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर. तो बेटा अमाउंट क्या होगा? व्हाट विल बी योर अमाउंट? तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 1500 1500 प्लस 15,000 plus 900. So 15900. Amount will be rupees 15900. Very good. So what will be the simple interest for the second year? So simple interest for second year. Okay? Or why simple interest? You write only interest. Interest for second year will be equal to your 15900 into 6 into 1 by 100. बस थोड़ा सा कैंसिलेशन है. PRT by 100. So simple interest 15 छक्के 90 900. So here 159 into 6 क्या होगा? अच्छा, इक्वल टू 9 6 54 और कितना? 15 छक्के 90 और 5 95 954. तो वही बोल रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर. तो यही हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर. ठीक है, खुश हो जाओ. ओके, नाउ
we shall continue from number 11, because 10 is also of the same type. So I hope you people have learned something. If you have really learned something, then only you be over here. Otherwise, TikTok videos are. So what do we have in 11? Here they talk about a person who invests. Principal is equal to rupees 5,000. चलो बाबू, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. For this is the investment, ठीक है? For 2 years, or you can say this is the investment. So let me write investment, and time is equal to your 2 years. Very good. At a certain rate of compound interest annually. This means ये छुपा के रखा है. तुम्हारा जो rate है is equal to R%, which you do not know. So why do not know means find it out. Simple. At the end of 1 year, the sum amounts to rupees 5600. At end of 1 year means amount. Let me write यहाँ पे. Amount at the end of 1 year. So beta is equal to 5600. So beta amount at the end of 1 year is equal to P1 plus R ये वाला R by 100 to the power T. तो 1 year तो यहाँ 1 ही होगा. Simple is equal to 5600. Very good. Let us solve. So 1 plus R by 100, 1 plus R by 100 will be equal to कितना बाबू? 5600 divided by 5000. चलो ठीक है. यहाँ पे एक लात मारे जो परसेंट विल कम यहाँ पे गिरेगा धम से पूरा एकदम. ठीक है ना? 0000. ओके. 1 plus R by 100 और थोड़ा सा कैंसिल करें. चलिए कोई बात नहीं है बेटा. यहाँ पर how many times? 225 times, 225 times and 228 times. तो आ जाइए यहाँ पे 1 plus R by 100 is equal to 28 by 25. Now I hope you people are able to see what I have written. नहीं तो फिर कमेंट बाजी करोगे. 1 plus that you have forgotten how to put dot, how to put comma. अरे देखो ना क्या, just understand the concept. और ये dot comma you keep on putting till the end of your life. 1 plus यहाँ देखो बेटा. 1 plus R by 100 is equal to this much. मुझे निकालना क्या? R निकालना है. So when you will have to find out R, then you have to send 1 on to the other side. आजा. R by 100 is equal to 28 by 25 minus 1. So now R by 100 will be equal to 28 minus 25 will be equal to how much? 3 by 25. Okay. Here you can see both of them are in multiplication and division form. Here they are in 3 multiplied by 1 by 25 are multiplied by 1 by 100. So you can easily cancel. ये वाला 25 4s are यहाँ पे. Or you can write that the value of your R is equal to कितना? 3 into 4. 3 4s are 12%. ठीक है? कोई problem? I think the weather has become very very bad and you people might not be able to see, but what to do? I'll continue with this. Okay. And come on. Let's start with number 12. अच्छा ये तो है, अब write कर देंगे. In number 12, what do we have? Calculate the difference between the compound interest and the simple interest on rupees 7500. The principal is equal to rupees 7500. Time is equal to 2 years. Rate is equal to 8%. What are they saying? Find the difference between compound interest and simple interest. तो भैया मेरे को समझ में आता है कि compound interest is bigger than the simple interest. Therefore, I will write CI minus SI only, not SI minus CI. क्यों जी? है ना? So let us find it out.
ओके, लेट अस फाइंड, दीवार खड़ा कर देता हूं मैं यहाँ पे, दीवार खड़ा कर दिया ना। हियर आई विल फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। आ जाओ बेटा, जो सबसे सस्ता है, इस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हाउ मच? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100, P इंटू T बाई 100। ज़्यादा जगह है तो कोई बात नहीं है ना। P क्या है? और वैसे भी नोटबुक मेरा है, आई थिंक यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। वाई आर यू वेस्टिंग पेजेस? आई वॉन्ट टू वेस्ट। 7500 क्या है बेटा? R 8%, टाइम 2 years, ओके, बाय 100। सी माई गुडनेस, कमाल हो गया जी। 75 इंटू 8 इंटू 2 विल बी इक्वल टू हाउ मच? विल बी इक्वल टू हो गया मेरा ₹1200। ज़्यादा इंटेलिजेंट है भी नहीं, ठीक है, 1200। हाउएवर ओवर हियर लेट अस फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बेटा पहले तो अमाउंट निकालेंगे ना। अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100। कहाँ है R? इक्वल टू 8, R बाई 100 टू द पावर T। अच्छा, अरे बाबा 2 हो गया, चलो कोई बात नहीं, 13 भी मैं, हाँ, 4 2s are 8 और 4 25 टाइम्स, मतलब 25 प्लस 2 27/25। आ जा बेटा यहाँ पे। सो अमाउंट इज इक्वल टू 7500 मल्टीप्लाइड बाय 27/25 इंटू 27/25। हाँ, गुड, बस सॉल्व करना है, कुछ नहीं है। 25 हाउ मेनी टाइम्स? 25 3s are 75, 0 एंड 25 हाउ मेनी टाइम्स? 4 3 12, 12 बार में, मतलब अमाउंट इज इक्वल टू 12 इंटू 27 इंटू 27। क्या जी? इज इक्वल टू ₹8748। तो ये तो अमाउंट निकला। यू वर सपोज टू फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कहाँ है भैया प्रिंसिपल? 7,500 तो लिए थे ना जी। सो हियर यू विल हैव 11248 इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस इज योर सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन पेट नहीं भरा, क्या बोला? कह रहा है कि फाइंड ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो लीजिए ना जी, 1248 कितना तंग करेगा? 1200 when you will subtract you will get ₹48। तो इससे क्या समझ में आई कि if you will have the a particular principle and if you have put it on compound interest, then in that case you will get more interest, you will then in comparison to simple interest। इसीलिए जब भी कभी पैसा लगाइएगा तो म्यूचुअल फंड हो गया, या नहीं तो RD हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट गया हो गया, isn't it? So these you can say not saving account, mutual fund, RD, or you can say SIP, systematic investment plan. So this all will give you money, give you interest in compound interest. तो बस मौजा ही मौजा। Very good. Manish, how much? He also 40,000. Very good. At 5%, rate is equal to 5%. अब बेटा टाइम भी कितना है? टाइम रेट बालक रेट इज 10.5%। बेटा गलती हो रहा है, सॉरी यार, 10.5%, चश्मा लेना होगा। एंड टाइम 2 years। वेरी गुड। प्रिंसिपल ओवर हियर रोहित क्या कर रहा है कि ही ऑल्सो टेक्स 40,000, टाइम 2 years, ठीक है, और रेट इज इक्वल टू 10%। So what are they asking? They are asking that which of these gives less interest and by how much? तो दिखाई नहीं दे रहा है, दोनों का प्रिंसिपल सेम है, टाइम इज सेम, रेट दिस इज लेस, दिस रेट इज लेस देन दिस वन, तो नेचुरली रोहित gets less interest। वेरी गुड। तो कह रहा है डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। तो मतलब कि मनीष माइनस फाइंड, जब आपको पता है कि रोहित गेट्स लेस इंटरेस्ट, देन फाइंड
मनीष MANISH मनीष का इंटरेस्ट माइनस रोहित का इंटरेस्ट। कैसा कैसा वाला इंटरेस्ट बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट। आ जाइए फटाफट एकदम, कोई झंझट नहीं। मनीष का निकालो तो ये 40,000 1 प्लस R बाय 100 10.5 है, देख लो कि मनीष का ना 10.5 बाय 100 टू द पावर 2 साल, कोई बात नहीं है। अगेन 40,000, देख के डर जाओगे, बाप रे बाप इतना बड़ा कैलकुलेशन, बट दिस कैलकुलेशंस कैन बी सॉल्व्ड स्मार्टली। देखना है कैसे? देख ही लीजिए, देख ही लीजिए। ये वाला रिमूव द डेसिमल, पुट 1 0 ओवर हियर। उसके बाद में क्या बेटा यहाँ पे 521 टाइम्स एंड 5 2 10 0 0। सॉल्व करें 200 प्लस 21 221। तो आप जरा सा आ जाइए यहाँ पे। फ्रॉम बोथ ऑफ दीज कैन यू पीपल टेक 40,000 कॉमन? आ जा, तो ये 40,000 इसमें भी है एंड 40,000 इज हियर ऑल्सो। वाई डोंट वी टेक आउट दिस 40,000 बाहर में? बाहर करो इसको 40,000। अब हियर व्हाट यू विल गेट? हियर यू विल गेट 200 प्लस 21 221 बाई 200 इंटू 221 221 बाई 200। वेरी गुड। माइनस 40,000 तो मैं बाहर निकाल लिया। हियर यू विल हैव 11 बाई 10। तो बेटा यहाँ 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10। कितना सुंदर लग रहा है, प्यारा प्यारा सा। ठीक है, आ जाओ, ज़्यादा नहीं। आई जस्ट यू कैन से टेक ओनली 2 मिनट्स, देयरफॉर प्लीज स्टे ट्यून। ओके, प्लीज़ तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर नहीं करोगे तो फिर हम प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। ठीक है ना? 40,000 मल्टीप्लाइड, आ जाओ बेटा यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 221 इंटू 21, रफ स्पेस इज ओवर हियर एंड देन यू विल गेट हाउ मच? 48841 बाई 40000 माइनस 100 एंड 21 बाई 100। क्लियर? विल यू टेक एलसीएम? ये 40,000 और 100 का एलसीएम विल बी इक्वल टू हाउ मच? दी एलसीएम विल बी इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा देख लूँ मैं, यहाँ पे विल बी 40,000 ओनली। तो ऊपर वाला जैसे का तैसा 48841 माइनस 100 हटाओ, यू विल गेट 400 इंटू 121 हाउ मच? 48400। आ जा, इसको लॉक करो। 40,000, क्या कमाल हो गया राजा सी। 40,000, सो 48841 माइनस 48400 बेटा क्या निकलेगा? इज इक्वल टू ₹441। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इंटरेस्ट ऑफ रोहित एंड मनीष एंड रोहित बोलते हैं। मनीष यहाँ पे यू कैन से ही इज रिचर, हिज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन दैट ऑफ रोहित। ठीक है?